So, a very good afternoon, all of you. Let's begin with today's session. कैसे हैं सब आप लोग? Please join in. Let's start with today's session on Article 12 particularly. हालांकि आपका सेशन आज दोनों के बारे में है, Article 12 and 13. Can you hear me? If anyone can tell me if I am audible to you, if you can hear me, if my voice is reaching you. Yes, please. A very good afternoon and a very warm welcome. Please join in so that we can start with the session. Good afternoon, Rupali. बात जज्बात और तुम. Can you just tell me your name once again? I just remember the first letter. Is it Triska or something? I'm really sorry. I'm not very good at, so I'm saying sorry to you. I'm not very good at remembering names. But I really want to know your name. Good afternoon. Yes, please. So quickly join in, all of you. I'll be starting with today's session on Article 12. See, basically the caption says that it is about Article 12 and 13, but then I realized that Article 12 and 13 Tushita. Oh yes, Tushita. It's a beautiful name, Tushita. Alright, I'm so sorry, Tushita, and now I'll remember this. I'll note it down and I'll remember this. And I'm actually noting it down. Alright. Thank you so much, Tushita. Alright. So, see, so I realize that, when you talk of Article 12, जब आप Article 12 की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा और एक complete topic है. और Article 13 में we have to talk about lot many cases, and then there are two doctrines, that is your doctrine of eclipse and doctrine of severability. तो इन सबके बारे में हमें जो है देखना है, इन सबके बारे में हमें जो है पढ़ना है. सो मुझे नहीं लगता कि एक सेशन में वो कंप्लीट हो पाएगा. सो आई कैन टेक अनदर सेशन ऑन आर्टिकल 13 बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, सो आई विल बी टेकिंग इट. बट आज हम केवल आर्टिकल 12 की बात करते हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? सो दैट आपके दिमाग में रहे और आपको ये याद रहे, ठीक है? So, what is Article 12 basically? Please take out your bare acts, all of you. I would request you to take out your bare acts, and yes, please do not forget to like the session, do not forget to subscribe, and do not forget to share it with your friends. If you find that, this is good enough and you can share it. अगर आपको अच्छा लगता है तो please go ahead and do it. See, so Article 12, bare act निकाल लिया है सबने अपना? Yes, no? सबके पास है bare acts? कुछ बताएंगे आप? हाँ है, नहीं है, खरीदा ही नहीं है अभी तक, ठीक है? यू हैव नॉट इवन बॉट इट. कॉलेज का तो होगा, आपने कॉलेज में भी पढ़ाई की है, ठीक है? अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, नहीं भी हैं तो आप ऑनलाइन भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का bare act खोल सकते हैं, ठीक है? इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, सो यू कैन जस्ट ओपन इट ओवर देयर. See, Article 12, now let's come back to the topic. Article 12 की जब हम बात करते हैं, when we talk about Article 12, so it is one of the first article with respect to your fundamental rights. Alright? So basically, it is provided under Part 3. ठीक? Certain facts for your PT, it is provided under, let me write it down. So we are here today talking about, just a second, Article 12. Alright? अब Article 12 कहाँ दिया हुआ है ये आपसे पूछ लेते हैं कई बार. So article, you know that under your Part 3 of the Constitution, ठीक है? Under your Part 3 of the Constitution,
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक it talks about fundamental rights. Alright? They talk about fundamental rights. They provide for fundamental rights. Article 12 is one of the first, article. Article 12 is one of the first article provided in your part 3. And that is why, it start with, when you read Article 12, part 3, fundamental rights के chapter में, so ये कैसे start होता है? It start with, in this, part. अगर आप पढ़ेंगे इसे तो क्या लिखा हुआ है? In this part मतलब this part, the part of fundamental right. So कुछ चीज़ें हमें आर्टिकल 12 के बारे में जो है वो स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है. We have to keep certain things in our mind. And what are those things? That when we are talking about article 12, so here we are trying to define state. In short, मैं आपको ये बता रही हूँ. Here we are trying to do what? Here we are trying to define state. कि state का मतलब क्या होता है? What is the meaning of state? Or if we are not trying to define state, at least we are trying to understand that what are those bodies or authorities which will be included in the meaning of state. Alright? What are those bodies or authorities which will be included in the meaning of state? क्योंकि जब आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आर्टिकल 12 और जब हम उसके केस लॉज देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो आर्टिकल 12 में प्रोवाइडेड है दैट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. तो स्टेट की डेफिनेशन केवल आर्टिकल 12 पढ़ के जो है वो खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इट हैज बीन वाइडली इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, थ्रू इवन सिंस द टाइम ऑफ 1950s. आर्टिकल 12 को इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है. अ सीरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड गिविंग मीनिंग टू वॉट एवर इज द कंटेंट विच इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 12. फाइन. सो स्टेट की जब हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 12, सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टेट ओवर हियर एंड मीनिंग ऑफ स्टेट विद द पर्पज ऑफ, नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, विद द पर्पज ऑफ नॉट ऑल द प्रोविजंस विच इज प्रोवाइडेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, नो वी आर नॉट टॉकिंग इन दैट टर्म्स. और इमरजेंसी स्टेट की बात कर रहे हैं, नो वी आर नॉट टॉकिंग इन दैट टर्म्स. पर्पसली वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट 3, दैट इज योर फंडामेंटल राइट. तो यहाँ पे जो हम स्टेट का मतलब समझते हैं, दैट इज द मीनिंग इज द इंटरप्रिटेशन इज ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. जैसे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. मतलब आर्टिकल 309 फॉर एग्जाम्पल 309 से लेके 311 में जो स्टेट आता है, हम ये उस स्टेट की बात पर्टिकुलरली उसके पर्पज से जो है यहाँ पे स्टेट का मतलब नहीं समझ रहे. हम किस पर्पज से समझ रहे हैं? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल व्हाट डज इट सेज? इट सेज in this part, so only for the purpose of part 3 and DPSP, fundamental right. And why it is important to understand? It is important to understand because background समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे स्टेट का मतलब हमें समझना क्यों ज़रूरी है. हमें यहाँ पे स्टेट का मतलब इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ते हैं, और हमने काफ़ी सारे मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए हैं. सो वी नो दैट, alright, we have an understanding that state को वहाँ पे it is a duty which is obligated on the state that the state cannot infringe the fundamental rights. Although fundamental rights are not absolute, but the state cannot infringe the fundamental rights. So वो कौन है? state का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, वो कौन सी bodies हैं, वो कौन सी authorities हैं, those who cannot infringe the fundamental right, जिनके ऊपर part 3 apply होगा. इसलिए हमें स्टेट का मतलब समझना यहाँ पे जरूरी है. बात समझ में आ रही है एवरीवन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो फिर मैं आगे बढ़ूं. यस प्लीज. हाँ ना, ये मेरा नेटवर्क स्लो है, आप जवाब दे रहे हो, मुझ तक नहीं पहुंच रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट?
Rupali, Manya, Atul, Tushita, everybody, right? So it is in this context that we are understanding the meaning of state. So let's read what is provided under Article 12. So Article 12 says that in this part, unless the context otherwise requires, alright, in this part, इस part में, मतलब कौन से part में, part 3 में, fundamental right में, unless the context otherwise requires, the term state include, alright, the term state includes the government and Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India. Now let's, bifurcate this article. Let's bifurcate this article. That day you asked something, right, Tushita, about the EWS when I was discussing Article 16. You asked that whether it applies in promotion or not, right? I forgot to mention yesterday. It was your question, right? कि मैम प्रमोशन में अप्लाई होता है कि नहीं? नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं. अभी ऐसा कोई मैंडेट नहीं आया है. Because this is just now came as an amendment, and it is not written in the article. I don't know, आपने पूछा था या किसी और ने पूछा था. So it is just now came as a new amendment, right? आपके 103rd amendment से ये आया है. Till the time there is some dispute which arises and the matter goes to the court and the court interprets it, right? And the court interpret it in that regard. So till now आपको यही समझना है कि अभी ये initial appointment level पे है. Because at least अगर हम strict rule of interpretation से जाएं, simple rule of interpretation, literal rule of interpretation जो है आपका Bear Act का, तो that is at the initial appointment level, which is my understanding. Again, that is my understanding. ठीक है, तो well, let's talk about Article 12. So Article 12 says that in this part means part 3. This part, alright. So what is that part? That part is part 3. That is your fundamental right. ठीक है? Okay. In this part, unless the context otherwise required, ठीक है, अगर context कुछ और है तब बात दूसरी है. But unless the context otherwise requires, the state includes, the word is includes, that means it is an inclusive definition. ठीक है, it is an inclusive definition. So it says the state includes what? What? The government and Parliament of India. Fine. Government and Parliament, obviously of India. हम बाहर फॉरेन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं. वी डू नॉट इंक्लूड अ फॉरेन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. स्टेट यहाँ लिख रही हूँ मैं पूरा नहीं लिख रही. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज. आई एम ब्रेकिंग इट. लोकल अथॉरिटीज. ठीक है, एंड देन फाइनली दे टॉक अबाउट अदर अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज within the territory of India. I am writing it over here, so that is important. ये एक और जो point है यहाँ पे. All these authorities should be where? They should be within the territory of India. Alright, within the territory of India, or they should be under the control of Government of India, GOI. ठीक है, so all these authorities, whether you are talking about a government, central government and a parliament, that is union parliament, ठीक है, or you are talking about the state government and the legislature of state, each state, or you are talking about local authorities, or you are talking about other authorities, they should be where? They should be within the territory of India or under the control of the Government of India. Now see, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है,
सो ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, आप इसको क्लियरली समझ सकते हो कि हम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, कि यूनियन एंड स्टेट्स के जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, जो भी लेजिस्लेटर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकल अथॉरिटीज़ की। लोकल अथॉरिटीज़ मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन लेके आया था? हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? आप जीके पढ़ रहे हैं आजकल, रोस्ट्रम लीगल में जीके की क्लासेस चल रही हैं। Who is considered to be the father of the local self government in India? Yes, please quickly. Lord Ripon. Lord Ripon को माना जाता है, ये आपके जीके में आ सकता है, ठीक है। He is considered to be the father of the local self government. Now, coming back to the point. So, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज़ की जब हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली यू नो, so there is a definition that is provided under your general clauses act, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मुझे बताना अगर आपको दिख रहा है तो, थोड़ी खिचड़ी पक गई है। सो जब हम लोकल अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, सो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, कहाँ पे? वेरी गुड अतुल, राइट। सो सेक्शन 331 ऑफ योर जनरल क्लॉजेज एक्ट में, I'm sure you're not able to see it. Let me shift this upward. So basically लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या? जो पंचायती राज, जो पंचायत, जो म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इनकी जो हम बात करते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द लोकल अथॉरिटीज़। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है स्टेट के डेफिनेशन में कि भाई पार्ट 3 इनके ऊपर एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, whether they come in the ambit of part 3 or not, इस एरिया में, अदर अथॉरिटीज़ में, ये जो एरिया है, कि ये जो अदर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि दे शुड बी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइन। बट ये अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या आते हैं? ऑलराइट, व्हाट all are basically included you know in the other authorities of India, and यही other authorities के concept को जो है वो time and again जो है वो interpret किया गया है, right? Now I'll give you a name, you know, generally उनके बारे में बात नहीं होती है, but you should go and read about Justice K.K. Mathew when you get time. So Justice, ये आपको पता नहीं, I don't know whether you know about this or not, ठीक है, जस्टिस के मैथ्यू, ठीक है। अब आपको पता है आर्टिकल 12 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अजय हासिया केस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फ्लैग बियरर केसेस, बट नहीं, आई वुड से नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन अजय हासिया वर्सेस मुजीब केस से पहले जो है बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए थे, देयर वर सो मेनी जजमेंट्स इन विच यू नो दिस अदर अथॉरिटी कॉन्सेप्ट वाज ट्राइड टू बी इंटरप्रेटेड. Although it was not a very liberal interpretation, but still the interpretation was done. Alright, and that is how you have to understand. See, so just why I took this name of Justice K.K. Mathew. So there was this case of, you know, इससे भी पहले एक केस था, let me just erase this. I have to write, or should I shift upwards? So why I took the name of Justice K.K. Mathew? Because he is actually the real flag bearer when you talk about, you know, that what is the concept of other authorities. क्योंकि जस्टिस के मैथ्यू ने जो अपने ऑबिटर में, क्योंकि वो ऑबिटर डिक्टा और रेशियो डिसेंडाई का मतलब आप समझते हैं, ऑबिटर डिक्टा मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, रेशियो डिसेंडाई मतलब जो आपका रेशियो, जो फाइनल जजमेंट आया केस का। सो जस्टिस के मैथ्यू ने जो बात जो है वो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस में कही थी अपने कॉन्करिंग जजमेंट में, ऑलराइट, इन हिज ऑब्जर्वेशन, दो इट वाज ही वाज अ पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी जजमेंट, बट जो बात व्हाटएवर ही सेड, व्हाटएवर टेस्ट ही लेड डाउन, ऑलराइट, रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारी बात जो है वो जस्टिस भगवती ने जस्टिस के मैथ्यू को रेफर करके फॉलो की थी। कहाँ पे? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस में, आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई एम जस्ट टेलिंग यू थोड़ा सा कहानी वाला बैकग्राउंड, आई विल टेल यू अबाउट द केस, ठीक है। एंड आफ्टर ही ऑल द टेस्ट वर लेड डाउन इन आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन केम द वेरी फेमस केस ऑफ अजय हासिया, जिसमें दोबारा से जो है
फिर जस्टिस भगवती ने उस समय फिर के मैथ्यू का नाम नहीं लिया, बट ही हिमसेल्फ रेफर टू हिज ओन जजमेंट विच ही गेव इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड देन whatever test he laid down over there, that was again upheld in Ajay Hasia case, and that is the case that we have been following, then Biswas case and all those cases. And finally in 2015 you had the case of BCCI wala, where it was held that कि state का जो interpretation है, it has reached its ending point, it has been interpreted in every way possible, so no more interpretation of the state is required, that what is another authority and BCCI is not a state. तो कहानी समझ में आ रही है आपको? So I just wanted to bring to your knowledge about Justice K Mathew, because people generally don't talk about him or just don't refer to him when we are actually talking about other authorities, when we are actually talking about that what is the meaning of this other authorities in state. अब हम आगे चलते हैं, अब हम chronological order में चलते हैं. So the very first case which was basically decided or interpreted as far as the what is another authority is concerned. आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? Is everyone listening to me? All right. So there was this case of Madras, where it was a question that whether a university should be a state or not. So I'll just write down the name of the case, or if you're listening, please write down. It was the case of University of Madras versus Shantabai. All right. And this is a case of 1954. So I'll go in the chronological order, right? So that is how you will be able to understand. ये फिर बीच की कहानी है जो मैंने आपको बताया. Now University of Madras versus Shantabai में again there was this issue, that whether university is considered to be a state or will come under the definition of other authorities as a state or not. ठीक है? So court ने ये held किया, that when you use the word other authorities and if you see it follows when you read the Bare Act, so वो किसके बाद आता है? वो आता है, the word is used, ठीक है? The word is used after the state government, the word is used after the central government, and the word is used after the state government, and the word is used after the local authority. So court ने कहा the rule of interpretation that should be followed is the agisdum generis rule, मतलब कि जो पहले words आ गए हैं आपको बाद वाले वर्ड्स को वैसे ही इंटरप्रेट करना है, और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो अगर आप अदर अथॉरिटी का डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं तो अदर अथॉरिटी को ऐसा होना चाहिए जो कि सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन पर भी सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म करे. सो इट कैन नॉट इंक्लूड अ पर्सन और नेचुरल और ज्यूरिस्टिक. ठीक है? So that is why, on this basis you will be deciding that whether a particular body is a state or not. But then, later on it was held that agisdum generis rule is not a very good way of understanding that whether a particular authority will be a state. Alright, so it cannot be resorted to interpreting that, whether this body will be considered as a state or not. Alright, nor can these bodies be placed in one single category. आपको इनको एक single category में भी डालना जो है वो मुश्किल है. So हम agisdum generis rule जो interpretation है, ठीक है, ये apply नहीं कर सकते to construe that whether a particular body is a state or not, which was applied in, or whether a particular authority is a state or not, which was applied in University of Madras versus Shantabai case. Then comes the case of, Mohanlal. That is a very famous case of Electricity Board Rajasthan versus Mohanlal. Alright. So यहाँ पे भी बहुत liberal interpretation नहीं हुआ था, but still. So this was a case of 1967. एंड इसके साथ साथ वो जो मैंने केस आपको बताया, ठीक है, वो 1975 का जजमेंट था जहाँ पे मैंने के मैथ्यू को रेफर किया. सो ये दोनों केसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ऑलराइट,
सो दिस वाज अ केस ऑफ 1967 एंड उसके बाद जो थर्ड केस जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वाज अ केस ऑफ सुखदेव सिंह वर्सेस ऑलराइट भगत राम, जहां पे के मैथ्यू का जिक्र आया. ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ 1975 and in this, by the majority judgment, a very restrictive interpretation of the word other authority was given by the court. ठीक है, and इन्होंने कहा कि only the authorities, which are created by the constitution or the statute are the other authorities. तो हमें ये देखना है कि उन्हें बनाया कैसे गया है. So if that authority is created by the constitution or that authority is created by any statute, so it will be considered as other authorities, though it is not necessary that statutory authority should be engaged in performing governmental or sovereign functions. हम ये नहीं देख सकते हमेशा कि भाई वो अथॉरिटी जो है सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है. ठीक है, या गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है. हमें देखना क्या है, what is to be seen, that whether that authority has been made under a constitution or whether that authority has been made by a statute. So by virtue of this क्या हुआ कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले केस में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम वाले केस में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन सारों को जो है दे वर हेल्ड टू बी एज अदर अथॉरिटीज. बिकॉज अगर आप देखें ONGC देख लें, LIC देख लें, ठीक है, सो ऑल दीज bodies have been made out of some or the other statute or some or the other act. So ये एक restrictive interpretation provide किया गया. यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में क्या था, that the authority should be performing a sovereign function. So aegisdem generis rule apply किया गया. But then further it was said that electricity board Rajasthan versus Mohanlal and Sukhdev Singh versus Bhagat Ram, that only seeing sovereign function is not enough. What is to be seen is that whether the body has been formed by a constitution or by a statute. If it has been formed by a constitution or a statute, then it will be considered to be it will come in the category of other authority. Now after these judgments, and यहीं पे सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम वाले केस में जो मैं आपको बता रही थी कि के मैथ्यू का ऑबिटर डिक्टा आया, although he was with the majority judgments, but यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में के मैथ्यू का ऑबिटर डिक्टा आया जिसमें उन्होंने जो सारे अपने ऑब्जर्वेशंस थे रिलेटेड टू द गवर्नमेंट कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑल दोज थिंग्स ही रोट डाउन, जो कि जस्टिस भागवती ने जो है फिर RD शेट्टी केस में पिकअप किया. एंड RD शेट्टी केस के बाद जो है देन फाइनली इट वाज रेफर्ड इन अजय हासिया केस. ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टू अनदर केस. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो इंटरप्रिटेशंस हुए वो थोड़े से लिबरल हुए. दीज वर कंसिडर्ड टू बी अ बिट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन. नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर 1975 जजमेंट, the interpretations that were done, they were considered to be a kind of a liberal interpretation that was done by the Supreme Court in order to understand what do we mean by other authorities. Now what happened in RD Shetty case? So RD Shetty versus International Airport Authority case or Airport Authority of India. Now this was a case of 1979 Supreme Court. Alright. So इसमें क्या हुआ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है वो टेंडर्स इनवाइट किए एंड RD शेट्टी ने जब टेंडर के लिए अप्लाई किया सो वो रिजेक्ट हो गया बेसिकली. Alright. So he went and he challenged that this is an infringement of his fundamental right and this cannot be done. Fine. So in this particular case basically एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इज अ स्टेट. और वो किस ग्राउंड पे कहा गया? बिकॉज अगर देखा जाए तो इट इज फॉर्म्ड बाय अ स्टैट्यूट. ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय एन एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट. ऑलराइट,
देन इसके बाद कुछ टेस्ट लेड डाउन किए गए. So it is not considered, so functionality जो aspect था basically कि what is the kind of the function that they are performing, whether they are performing a sovereign function or a non-sovereign function, so this was not taken care of. Only it was said that, the function should have some public importance. Alright, the function should have some public importance, but finally it was held that ये जो test laid down किए गए हैं इसमें these are not conclusive test, but these are illustrative in nature. ये आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, ये बस आपको बता रहे हैं कि ओके फाइन, अदर अथॉरिटीज़ के केस में आप ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. नाउ व्हाट वर दीज टेस्ट? सो दीज टेस्ट वर नंबर 1 दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फंडिंग दैट इज कमिंग चीफली फ्रॉम द स्टेट. ऑलराइट, कि जो भी फंडिंग हो रही है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? दैट इज कमिंग चीफली मेनली फ्रॉम द स्टेट. नंबर 1. नंबर 2, देयर इज अ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल. ठीक है, कि स्टेट का जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उस बॉडी पे, उस अथॉरिटी पे. कैसे? डीप एंड परवेसिव. डीप मतलब इंटरनली देयर इज अ कंट्रोल, परवेसिव मतलब ऑल राउंड, हर तरीके से. ठीक है, ऑल अराउंड द कॉर्नर द स्टेट हैज़ अ कंट्रोल. सो चाहे वो अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे वो रिमूवल ऑफ मेंबर्स की बात हो ऑफ द सोसाइटी की. ठीक है, व्हाट इज देयर? द स्टेट इज परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी. Third, the functions of the corporation, as I told you, they are of some, public importance. कुछ ना कुछ public importance है, वो भी जो भी functions जो है वो perform कर रहे हैं. ठीक है, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है उस कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट था, कोई भी हिस्सा था, उसको आपने जो है उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया है. एंड फाइनली द कॉरपोरेशन enjoys a monopoly status. And that monopoly status is given by the state and protected by the state. So ये 5 टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं. All these 5 tests become, very important in order to, number 1, financial control. Number 2, and the financial funding is coming from the state. Number 2, there is a deep pervasive control of the state. Right? Number 3, the functions of the corporations are of public importance. Number 4, if a government department is transferred to the corporation. And number 5, if the corporation enjoys any kind of monopoly, and that monopoly is given by the state, and that monopoly is protected by the state. Clear? Is it clear, everyone? Alright, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ. देन इसके बाद आपका नेक्स्ट केस जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. वो हो जाता है सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. राइट, 1981 सुप्रीम कोर्ट. सी सोम प्रकाश रेखी में, ये इससे पहले जो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो बात की केस में, देयर वाज अ वेरी लिबरल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइडेड. ऑलराइट, सो इट वाज held that in सोम प्रकाश रेखी केस कि इट इज़ नॉट दैट जब हम अदर अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो केवल स्टैट्यूटरी बॉडी को नहीं इंक्लूड करता. ठीक है, वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को भी इंक्लूड करता है. स्टेट अथॉरिटीज़ की, अदर अथॉरिटीज़ की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ अदर अथॉरिटीज़, सो इट डज नॉट ओनली इंक्लूड स्टैट्यूटरी बॉडीज, इट ऑल्सो इंक्लूड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज. ठीक है, if the body is functioning as an instrumentality of the government or the agency of the government. समझने वाली बात यह है कि वेलफेयर स्टेट में सारा काम गवर्नमेंट खुद से तो नहीं परफॉर्म कर सकती, या फिर केवल जो चुनिंदा जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या लेजिस्लेचर हैं उनके थ्रू तो नहीं परफॉर्म कर सकती. सो द गवर्नमेंट नीड्स सम एजेंसी, द गवर्नमेंट नीड्स सम एक्स्ट्रा हैंड्स, द गवर्नमेंट नीड्स सम इंस्ट्रूमेंटैलिटीज who function as the agent of the government. And if there is any authority which is functioning as the agency of the government, then in that particular case, that particular authority will be considered as a state. ठीक है,
सो इस केस में सोम प्रकाश रेखी केस में ये बात कही गई कि द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इज जस्ट नॉट कन्फाइंड टू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, रादर इट इंक्लूड्स नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज एज वेल. ठीक है. सो basically in this particular case the emphasis was on functionality कि आप क्या function provide कर रहे हो. तो आप अगर welfare state को उसका function perform करने में help कर रहे हो, so basically in this particular case the emphasis was on functionality as well as the state control कि किसका control है किसके ऊपर. So if the government controls the body as an instrumentality, so even if it is a non-statutory body, it will come under the definition of other state. And then finally comes the case of Ajay Hasia wala, जो कि बहुत ही widely discussed और famous case है. So Ajay Hasia case में basically ठीक है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की बात हुई. अजय हासिया केस में वही सारे टेस्ट जो हैं वो लेड डाउन किए गए और कहा गया कि अगर कोई सोसाइटी भी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ द केस. अजय हासिया versus खालिद मुजीब. ये है आपका 1981 सुप्रीम कोर्ट. Can you see this, everyone? दिख रहा है आपको? ये यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब. ठीक है. तो इस केस में जो है यही कहा गया कि अगर कोई सोसाइटी भी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898, ऑलराइट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898, इट इज ऑल्सो एन एजेंसी और एन इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द स्टेट. ऑलराइट. और लॉजिक क्या था इसके पीछे? लॉजिक सिंपल सा था कि गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है ओवर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. बट सी एंड एक इसमें सवाल पूछा गया एंड ऑल्सो since the time of R.D. Shetty, it has been asked that we have to understand that not that how that juristic person is created, but why that juristic person is created. हमें ये सवाल नहीं पूछना है कि कैसे बनाया गया है इस juristic person को या इस अथॉरिटी को. रादर हमें जो सवाल पूछना है और जिसका जवाब हमें चाहिए वो ये है कि क्यों बनाया गया है. इट इज नॉट अबाउट हाउ दिस अथॉरिटी इज क्रिएटेड बट रादर व्हाई दिस अथॉरिटी इज क्रिएटेड. एंड इफ द अथॉरिटी इज क्रिएटेड टू फंक्शन एज अ इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट as far as the welfare function of the government is concerned, then in that particular case it will be considered that it is the other authority, it comes under the or it falls under the other authority of the government. Is it clear everyone? आप समझ पा रहे हैं? right? एंड देन इसके बाद दो केसेस के नाम मैं आपको बता दे रही हूँ एंड देन इन शॉर्ट में अगेन आपको रेटरेट करूंगी व्हाट आर दोज 5 or 6 टेस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर अदर अथॉरिटी. सो 2005 में देन देयर वाज दिस केस ऑफ जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑलराइट. एंड अगेन देयर वाज दिस इशू ओवर देयर दैट वेदर बीसीसीआई कम्स अंडर द स्टेट और नॉट. सो कोर्ट ने उसमें हेल्ड किया था कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट. अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया प्रिलिमिनरी में कि BCCI by virtue of Z Telefilms Limited versus Union of India 2005 Supreme Court, the court said that BCCI is not at all a state. It is an autonomous body and it is not created by transfer of a government owned corporation. All right.
So it is enjoys a completely monopoly status, and that monopoly status is not conferred by the state. BCCI को छोड़ के और कौन सी body है, right, which talks about the cricket regulations and everything? No other body, right? So that is why the government said that BCCI does enjoy a monopoly status, but this monopoly status is not conferred to the BCCI by the government, and it is not protected by the government. So it is not a state. अगर आप monopoly status की बात भी कर रहे हो as a test, so that monopoly status should be conferred by the state. But in case of BCCI, it is not conferred by the state. And then there was this case of BCCI versus Cricket Association of Bihar 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. I'll just write down this case. ये हटा के. So BCCI versus Cricket Association of Bihar. This is a judgment of 2015 Supreme Court. ठीक? So in this particular judgment, it was said that the definition of state terminates over here, and whatever expansion was required, it has been done. And again, it was reiterated that BCCI is not at all a state, although it can be a monopolistic body. BCCI versus Cricket Association of Bihar 2015 Supreme Court. The earlier one, Z Telefilms Limited versus Union of India, that is 2000. इससे पहले इसमें decide हुआ था. I'll write down. Z Telefilms Limited versus Union of India 2005 Supreme Court. ठीक है? In this it was decided. Right? That BCCI is not a state. So finally, क्या tests हैं? Do you want me to write down? Do you want me to write down? What are the tests basically to understand that whether this other, सुन लीजिए आप और उसको प्लीज लिख लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है? What are those tests which actually help us in understanding that what is an other authority under Article 12, जिसपे कि Part 3 and DPSP apply होगा. So these are the tests. Number one, that the entire share capital is held by the government. So that was basically laid down, taken from Ajay Hasya and R.D. Shetty, and it's a culmination of all the cases. कि जो भी शेयर कैपिटल की हम बात करते हैं, ठीक है, that should be held by government. Number one, that the entire share capital shall be held by government. Number two, the financial assistance. There should be a great amount of financial assistance. Alright, there shall be a great amount of financial assistance to be provided by the state. So if the state has a financial assistance का क्या मतलब है कि the state is also having a financial control. ठीक है? Number three, there should be a monopoly status, and monopoly status of the nature that it is conferred by the state and protected by the state. Not just any monopoly. Monopoly तो BCCI की भी है, but it was not considered to be a state. Alright, so monopoly status should be of the nature which is conferred by the state and it is protected by the state on that particular body. Then there is a deep and pervasive control, state control on that particular authority. So as I told you कि appointment से लेके, removal से लेके, termination से लेके, all these things, right? So there is a deep and pervasive control of the state on that particular body. And as I said, the function of the cooperation कि किसी एक गवर्नमेंटल ऑर्गन को जो है या फंक्शन को जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है उस कोऑपरेशन में, एंड ऑल्सो द कोऑपरेशन परफॉर्म्स द फंक्शन as an instrumentality of the government, as an agency of the government. So when the authority performs the function as an instrumentality of the government or the agency of the government to further the objectives of the state as a welfare state, so it will be considered that it comes under the category of
अदर अथॉरिटी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टेस्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अच्छा मुझे ये बताओ, इज जुडिशरी अ स्टेट? क्या जुडिशरी को हम स्टेट बोलेंगे? इज जुडिशरी इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ स्टेट? क्या हम ये कह सकते हैं कि जुडिश, बिकॉज हम ये क्यों समझ रहे हैं, ये समझने के लिए कि वेदर यू नो whether the authority is infringing the fundamental right or not. All right, so can we say, if I just erase this, if I ask you a question, मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्पून फीडिंग नहीं होगा, what do you think? आपको सारा जवाब मुझसे चाहिए, बताइए. I'm writing the question over here. Is judiciary a state? Yes, no, what? क्या लगता है आपको, क्या जुडिशरी स्टेट है? बताइए, what do you think? What is the example of judiciary exercising an executive function? अच्छा चलो, I'll come to that later. See, time and again, you know, now generally it is considered that yes, because though it is not expressly mentioned under Article 12, all right, but then it should be included, since courts are also, you know, they are set up by the statute and their powers, they are conferred by law and it is derived from the constitution. So ऐसा discussion है, debate है, that the courts, like any other organ of the state, are they are limited by the mandatory provisions of the constitution. Very good. Article 145, Article 146, right? Very good, right? So see, when the judiciary, and she is absolutely right when she says, and very good, when she says that, you know, when the it depends upon what function the judiciary is performing. But ये सारा डिस्कशन अपनी जगह है कि ठीक है, इवन द जुडिशरी इज बीन गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, इट इज मेड अप ऑफ एक्ट, इट इज डिराइव फ्रॉम अ स्टैट्यूट एंड इट इज डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम अ स्टैट्यूट एंड ऑल दोज थिंग्स, एब्सोल्युटली फाइन. एंड ऑल्सो द जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. ऑल राइट, सो आप कैसे जो है वो जो सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं उनके अगेंस्ट आप कैसे जो है खुद फंडामेंटल राइट वो आप इशू करोगे, रिट्स इशू करोगे, आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट कैसे करोगे? Because High Court in itself is the custodian of the fundamental right. The Supreme Court in itself has exclusive jurisdiction with respect to the fundamental right under your Article, 32. Right? Now, so that is why you have judicial review का concept. That is why when you read Article 13, जो कि इससे interrelated है, कि अगर कोई law ऐसा है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, पहले तो केवल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है, बट देन अंबिका मिल्स जजमेंट, सो इवन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड बोथ द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उनको देखा जाता है कि इफ दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू दैट एक्सटेंट, तो उसे जो है वो या तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आप यूज करते हो वहाँ पे, या फिर अगर आप सीवर उसको कर सकते हो, सेवरेबिलिटी अप्लाई कर सकते हो, तो आप उसे सीवर कर सकते हो एंड दैट इज डिक्लेयर टू बी वॉइड और वॉइड ऑफ इनिशियो, दैट इज अ मैटर. वो डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द स्टैट्यूट. तो जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी, ऑल राइट, सो जुडिशरी particularly when it is performing a function as a custodian of the fundamental right, then it has been, so no judicial, so there is this case of Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra, जो कि क्यूरेटिव पिटिशन से रिलेटेड आपका केस है. सो उसमें ये कहा गया था कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग जनरली ऐसा नहीं होता विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स. ऑलराइट, सो सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ जस्टिस बेसिकली जो है, सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जो है, दे डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट और अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12. ऑलराइट, फाइन. But then there has been, but when, as if there is Article 145 where we are talking about the rule making power which is there under Article 145 of the Constitution, or Article 146 that we talk about, they could be covered under the expression of state. So एक बार आप जाके Article 145 और 146 देख लीजिएगा, so you will have a better understanding of it, that what we are talking about.
But as far as the judicial proceedings are concerned, as far as judiciary acting as a custodian of the fundamental rights are concerned, as far as the other, trials and methods are concerned, so we cannot say that the judiciary is acting as a state or as other authority. All right. But if the judiciary is performing a function which is in the nature which is provided under Article 145, yes, then it can be said that judiciary comes under the definition of state. ठीक. बट राइट अवे जो आपका आंसर होगा, अगर आपसे ऑप्शन में प्रिलिमिनरी में ये पूछते हैं और अगर इतना डिटेल्ड ऑप्शन देते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस परफॉर्म्ड, तो आप ऑप्शन ये मार्क करोगे कि डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस परफॉर्म्ड. बट जनरली अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए तो नो, it is not a state unless and until they give you an exception of Article 145 of the Constitution. Is it okay with everyone? बात समझ में आ रही है? Is it fine? Are you able to understand what I am saying? ठीक है, फिर आज की क्लास ख़त्म करें. हम कल फिर मिलेंगे. वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड आई विल सी व्हेन टू डिस्कस आर्टिकल 13 विथ यू. मुझे आपके साथ आर्टिकल 13 डिस्कस करना है एंड देन after this we will be starting with a new subject and from the next week onwards and you will be given a detail about it. A detailed schedule will be there, so then again we can start with some new and fresh topics. Also, if you want any other topic in subjects like evidence, contract, I'll be telling you. ठीक है, जो subject शुरू होगा वो आपको पता चल जाएगा. Sunday को you will be getting the entire detailed timetable. हर बार Sunday को आपको timetable मिल जाया करेगा. ठीक है. And then also in the comment section you can let me know if there is any topic which you want me to help you with or you want me to guide you in. So you can definitely let me know in the comment section. ठीक है. So thank you so much all of you for joining in. I'll take your leave. Take care and see you again tomorrow at the same time. And do share it with your friends. Do not forget to like the channel. Do not forget to like the session and subscribe and join to the Telegram group as well. Right? Thank you. Take care. Bye-bye. How old are Thode Dream Judiciary lectures? I couldn't understand. Tushita? Those are all fresh lectures, new lectures. They are not at all old lectures. The links are not added in the description box? Oh yes, you asked me to add the links. Okay. Acha, Article 14, 16. I'll add. It will be added today. It will be definitely done today. Those are all new lectures. Those are all new lectures. Those are not at all old lectures. They are not old lectures. Whatever time it would have taken in completing those lectures, that is the time period. Alright. Alright, I'll add those link, Manya. Thank you so much all of you. Take care. Bye-bye. कल मिलते हैं.